वालेकुम, आ गए तुम सब? यस सर। ओके, 1 मिनट जरा रुको। एक सेकंड बेटा, मुझे से लिखना है इनको। हम तुम्हारे कोर्स का कोड क्या है इस थ्योरी ऑफ? हेलो, किसी को पता है इस कोर्स का कोड क्या है? सर वेट एक सेकंड सर। MTH ये इसको लिखना है। अरे क्या है इसका? कुछ है ना, ई शायद, ई MTH ई। अरे तुम्हें किसी को ये नहीं पता? सर MTH E904। E904। यस सर। इसका नाम भी बदल गया ना, वो थ्योरी ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस है ना। यस सर। एक मिनट, प्रिपरेशन हो रही है? 904 सर। 904, ठीक है। ओके चलो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन हो रही है, कैसा चल रहा है? तो मैं कल तुम्हारा सर टेस्ट ये है हाँ, बहुत 11 बजे। ज्यादा है सर, ये बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? सर 1 यूनिट नहीं होगा। मैंने यूनिट में काफी कम किया। तो नो वैसे बोल रहे सर, थे सर कि हम एक कल पूरा से एक पढ़ रहे थे, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तुम्हें वो मतलब ठीक से सर ये बहुत समझना है, ज्यादा। क्योंकि वो तुम्हें वो रट्टा थोड़ी करना है, तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना। तो मैंने एक सर अच्छी वही ना, आधे घंटे में ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे, या ये तो इसमें सिर्फ घंटा न्यूमेरिकल दूंगा मैं, एनालिसिस है घंटा सर। दूंगा मैं, घंटा घंटा, 1 घंटा। और मैंने देख लिया, मैंने वो रखे हैं। 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक। क्योंकि मुझे लगता है मैं 10 रखने वाला था, लेकिन मुझे फिर लगा कि कुछ को ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ को कम, तो मुझे लगा वो फेयर नहीं है, सर क्योंकि मैथ्स में सर थोड़ा उसको फिर करना भी पड़ेगा। मतलब
अरे सर चार हाफ ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनिट तक टोटल, ठीक था। एक का एक, दो का 2 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक। सर कल से पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर तुम वो अच्छे से पढ़ लो, न्यूटन्स रिलेशंस, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ। सर हमने किया, हाँ न्यूटन सर हमने पढ़ा था, वो ऑर्थोगोनल फंक्शंस था। ऑर्थोगोनैलिटी में भी उतना नहीं आ सकता ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन ज्यादा वो जो न्यूटन्स रिलेशंस है उस पर ज्यादा फोकस यस करना। सर वो पढ़ा है सर। तो फिर कोई बात नहीं, तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे है कि मैंने ये भी देखा है ना कि मतलब तुम नकल ना कर पाओ, ठीक है। तो नकल का नहीं यस सर। सोचना, पढ़ना, ठीक है। ओके। यस सर। ओके चलो शुरू करते हैं फिर। अच्छा कल हमने क्या किया था लास्ट टाइम, एक मिनट में जरा, एक्चुअली मुझे इसको भेजना था अभी ना, ये तुम्हारी अटेंडेंस। अब मैं ऐसे ही मैंने रफली इनको भेजा कि ये लेक्चर्स हैं, इतने हैं इस कोर्स में, उसी में मुझे लग गया टाइम। उन्होंने बोला नहीं अभी अभी 4 बजे से पहले ही भेजना है। तो ओके, मैंने लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पहुंचे थे, हमने किया था वो गॉस लुकस थ्योरम, राइट। तो फिर हमने की थी वो बर्नस्टीन थ्योरम हमने किया था, No, sir. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लुकस थ्योरम। हाँ किया था ना वो, इस हमने ये लास्ट टाइम शायद ये किया था लास्ट वाला, कि ये जो इस टाइप का पॉलिनोमियल होता है सी जेड वटेवर सी इज नॉन जीरो नंबर माइनस जेड प्लस वन, इसका कम से कम एक जीरो होता है इन mod z less than equal to 2। ये है ना तुम्हारा लास्ट वाला, शायद यही है। सो नाउ लेट्स डू द थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड बर्नस्टीन्स थ्योरम। बर्नस्टीन के बहुत सारे थ्योरम हैं, इसलिए मैं इसका नाम थ्योरम ही रखूंगा बजाय बर्नस्टीन्स थ्योरम। सो वो ये है कि इफ pz and qz are polynomials such that degree of pz is less than equal to degree of qz and qz has all its zeros in mod z less than equal to k, if again पहले तो ये है हमारा बेसिक हाइपोथेसिस, if pz, if then pz is less than equal to norm of qz for mod z equal to k, it would imply their derivatives would also have the same relation, yani p dash z is less than equal to q prime z for mod z equal to k on the boundary, actually for k greater than equal to k, मतलब z, actually this is true for greater than equal to k also, लेकिन in particular for z is equal to k, mod z is equal to k। प्रूफ, एक्चुअली इसका एक और फॉर्म भी है कि मतलब इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब दिस इज ट्रू फॉर एनी कॉन्वेक्स रीजन, जहां पे हमारा गॉस लूकस थ्योरम चलेगा वहां ये थ्योरम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिया एक्चुअली ये रीजन mod z लेस देन इक्वल टू k, बट दिस कुड बी मोर जनरल रीजन, जिसपे चूंकि गॉस लूकस थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी कॉन्वेक्स सेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो इस कॉन्वेक्स रीजन में है तो फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी उसी रीजन में है, क्योंकि इसके लिए हम यूज करते हैं गॉस लूकस थ्योरम ही। तो यू कुड आल्सो राइट दिस, मतलब दिस कुड आल्सो बी द स्टेटमेंट कि अगर डेल्टा की बाउंड्री है, बी द बाउंड्री ऑफ एनी कॉन्वेक्स रीजन, कॉन्वेक्स रीजन, लेट मी कॉल इट के, मतलब नॉट के नहीं लिखते, के ऊपर लिख चुके हैं, in the z plane, the complex plane, ये भी इसकी एक स्टेटमेंट बन सकती है, बिकॉज गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी कॉन्वेक्स रीजन। ओके क्या था, एंड पी एंड क्यू की यही, एंड पी एंड क्यू की यही सब कुछ कंडीशंस हैं, यानी पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल्स such that degree of pz is less than equal to degree of qz
चलो इसको अगर मैं नंबर 1 लिखूं, नंबर 2 क्या है अपनी कंडीशन, pz in mod is less than equal to qz for mod z or mod z belonging to the boundary delta k 3 all zeros of qz, ये जो डोमिनेट करता है, lie in the region, चलो in the convex region, चलो इसको मैं k ही लिखता हूँ, चलो बेटर यही है, ओके मतलब यही है फॉर कॉन्वेक्स रीजन. देन mod of pz is also less than equal to mod of qz for the boundary of that convex region, not just a disk. That is the basic point. It could also be a half plane or any convex set. So that is the statement. Prove हमें करना है इसको. No, this would be another statement of the same theorem, a more general statement actually. So let's do the proof. Proof में हम basically Gauss-Lucas theorem use करेंगे. Now, since all the zeros of the key qz, all the zeros of my polynomial q lie inside this disk mod z less than equal to k, lie in region mod z less than equal to k. Therefore, q of z would be non-zero in mod z bigger than k, क्योंकि ये z जहां पर vanish होता है वो तो inside this disk है, and hence f of z जो है वो है pz by q of z is analytic, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर वैनिश नहीं होता in mod z bigger than k. Okay. Also कहाँ गया ये, हमने क्या किया, ओके हमने लिखा fz is like this. Also ये वाली कंडीशन p of z is less than equal to q of z on mod z equal to k है, mod z equal to k, तो इसको अगर मैं यूज करूं, it implies that also mod of fz, which would be mod of pz divided by qz, this would be less than equal to 1 on mod z equal to k. Hence, by maximum modulus theorem, maximum modulus principle, f of z would be less than equal to 1 for all mod z greater than equal to k. क्योंकि बाउंड्री पे है, इसमें थोड़ी सी सटलिटी है कि क्योंकि हम मानते हैं जो qz की जो डिग्री है वो pz से ज्यादा है. So and at infinity, because we are talking about a region outside this thing, that would include, matlab we have to think what would happen at infinity. So this would be pretty much finite at infinity. So there is no issue, right? Because जो qz की degree है वो pz से ज्यादा है. If you have a lower degree, so this would approach zero as z approaches infinity. मतलब z approaches infinity, yes. क्योंकि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री ज्यादा है, नहीं कम है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है ऑफ कोर्स. सो वो जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज डिग्री ऑफ pz हैज टू बी लेस देन डिग्री ऑफ qz फॉर इट टू बी मीनिंगफुल और फॉर अप्लाइंग द मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल. ओके, व्हिच implies that p of z is less than equal to q of z in mod for mod z greater than equal to k. Now let delta be any complex number with modulus of delta bigger than 1. Then I can say, then I can also write that mod of pz by qz, which is less than equal to 1, is strictly less than delta, which implies that mod of pz is strictly less than delta times mod of qz. Of course, sorry, ऐसे नहीं लिखना चाहिए. Okay.
for mod z bigger than equal to k. Okay, now since अब मैं यूज करूंगा, since all the zeros of qz, जो एक और कंडीशन थी मेरी, zeros of qz lie in mod z less than equal to k by Rauch's theorem. Rauch's theorem, all the zeros of gz, all the zeros of this polynomial of g of z, that's equal to, let me write it as pz minus delta times, this is just a number which is modulus bigger than 1, lie in mod z, okay, less than equal to k. अब ये देखने के लिए just have to apply Rauch's theorem. So you just add these polynomials, जो है ना qz, delta qz. So if you have gz plus delta qz किसके बराबर होगा? This is what? इसको अगर delta qz add करेंगे तो what do you get? You will get p of z, है ना? Which is less than delta of q of z on mod z equal to k. क्योंकि ये जो रिलेशन है ये हम यूज कर रहे हैं. This is true for all mod z greater than equal to k, so it must be also true for mod z equal to k. It means on the boundary this polynomial is dominated by this particular polynomial, which means of course you can also, I could have also written it, which is further less than equal to delta qz plus mod of gz. क्योंकि मैंने एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ऐड की, अगर ऐसा हो तो मतलब इसके और इसके जो जीरोस हैं वो सेम होते हैं इनसाइड द डिस्क. सो चूंकि अब क्यूजेड के सारे उसी में लाई करते हैं और डेल्टा इज जस्ट अ नंबर, तो डेल्टा क्यूजेड के भी जितने जीरोस होंगे वो उसी डिस्क में लाई करेंगे. एंड बाय राउचीज थ्योरम ये जो जीजेड है इसके भी सारे जीरोस लाई करेंगे इन mod z less than equal to k, मतलब इनसाइड mod z. Okay, actually inside mod z less than k, but it includes that region. ठीक है ना? Because inside of a disk is contained inside the disk, of course. Okay, so therefore by Gauss-Lucas theorem इसका जो derivative है gz का, therefore by Gauss-Lucas theorem all the zeros of g dash z उसका जो derivative है which is equal to p dash z minus delta times q dash z, let's call it star, will also lie in mod z less than equal to k. ये इंपॉर्टेंट है. जहां तक हम लोग पहुंच गए, we claim, जो हमें प्रूव करना है, we claim that mod of p dash z is less than equal to mod of q dash z for mod z bigger than k. Though I want to prove this. Actually मुझे दिखाना है on the boundary, लेकिन मैं दिखाऊंगा पहले बाहर. ये सच है. For if suppose it is not the case, now assume to the contrary. Assume to the contrary मतलब assume to the contrary, then there exists some z naught with norm of z naught bigger than k such that modulus of p dash at z naught is strictly bigger than modulus of q dash at z naught. मतलब ये होगी ना, अगर हर एक के लिए ये ट्रू नहीं है तो अगर हम इसका कॉन्ट्ररी मानेंगे यानी कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा इस रीजन में जहां पे इस इनइक्वालिटी का रिवर्स होगा, which would imply that mod of p dash at z naught q dash at z naught is bigger than 1. So let delta be equal to this number. मैंने डेल्टा नाम रखा था इसका, जो ना मैंने माना था कोई नंबर जो बिगर देन 1 है. हाँ, ये स्मॉलर डेल्टा.
तो लेट डेल्टा बी इक्वल टू, जो मैंने लिया था कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मोड बिगर देन 1 है, तो ये भी चल जाएगा क्योंकि ये बिगर देन 1 है। हेंस अगर मैं देखूं g डैश z नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर है, p डैश z नॉट माइनस p डैश, वो मैंने गलत किया, इसको मॉड हटाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ लेकिन इसका मॉडुलस बिगर देन 1 है। तो अगर मैं डेल्टा को ये लूं, so let delta be equal to this, then delta पे क्या कंडीशन है, it has a complex number, just a complex number whose mod is bigger than this one, तो इस पे भी अप्लाई होगा, है ना। तो बट g डैश एट z नॉट जो होगा वो होगा p डैश z नॉट डेल्टा की जगह डिवाइडेड बाय q डैश z नॉट इनटू q डैश एट z नॉट। मतलब अगर मैं स्टार पे अप्लाई करूं, now this is equal to 0, which implies that g dash z has a 0 outside, मतलब z नॉट क्या है, z नॉट is bigger than k, या has a 0 with mod of, has a 0, let me call it z naught with mod of z naught bigger than k, which is a contradiction to star, क्योंकि हम कह रहे हैं इसके सारे के सारे zeros within this region है z less than equal to k, ठीक है, has a 0 z naught with, so which is a contradiction to star, which is a contradiction to star, therefore ये जो claim है हमारा वो सच है, therefore p dash z is less than equal to q dash z for for mod z bigger than k, for mod z bigger than k. Also now since, अब मैं ये कर सकता हूँ, now since p dash z and q dash z are continuous and hence and q dash z does not vanish in mod z bigger than k, क्योंकि इसके सारे जीरो इनसाइड है, क्योंकि q के सारे जीरो इनसाइड है, और ये तो है ना उसका डेरिवेटिव बाय कॉस्ट लूपस थ्योरम, इसके सारे जीरो भी अंदर होंगे। सो आई कैन से p mod of p dash z divided by q dash z is a continuous function for mod z bigger than k, which implies that and mod of p dash z divided by q dash z, साथ में ये भी तो है ना, is less than equal to for mod z bigger than k। अब कंटिन्यूअस है तो इसका मैं लिमिट ले सकता हूँ ना, मतलब आई गॉट अ रीजन लाइक दिस, यहाँ पे कोई फंक्शन जो कंटिन्यूअस है उसका कुछ वैल्यू है, आई टेक द लिमिट एज आई अप्रोच हियर, राइट। सो फिर इसका वैल्यू भी, लिमिटिंग वैल्यू भी जो इस बाउंड्री पे आएगा वो भी सेम होना चाहिए, राइट, क्योंकि हर मतलब थोड़ा सा भी अगर हम यहाँ गए तो इट इज दिस थिंग होल्ड्स, इट मींस बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट मस्ट होल्ड आल्सो ऑन द बाउंड्री। सो बाय कंटिन्यूटी आई कैन से p dash z प्लस q dash z, क्योंकि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है राइट हैंड साइड पे, जब मैं लिमिट लूंगा as z approaches k, rather mod z approaches k, so I can say this is true for mod z greater than equal to k, and in particular I can say mod of p dash z is less than equal to mod of q dash z for mod z equal to k. So that was our Bernstein's theorem. ना थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट फिर से तुम देख लो कि p and q z are two polynomials और q z की डिग्री ज्यादा है, और साथ में ये जो p z is less than equal to q z on the boundary, तो इनके डेरिवेटिव्स भी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, प्रोवाइडेड
QZ की डिग्री PZ से ज्यादा है और QZ के सारे जीरोस विद इन दैट डिस्क है, तो बाउंड्री पे अगर ये डोमिनेट करेगा इसको, तो इसका डेरिवेटिव भी उसके डेरिवेटिव को डोमिनेट करेगा, उससे बड़ा होगा। ओके, इससे हम निकाल सकते हैं, कहाँ गया, व्हाट वी कॉल बर्नस्टीन्स इनइक्वालिटी। हाँ, पहले ये कोरोलरी ऑब्वियसली इससे मिल जाती है कि अगर मैं लूं डिस्क 1 के लिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा। So that means if I have a unit disk, now if k is equal to 1, मतलब ऐसे भी आ सकते हैं ना, for the above theorem would become above theorem reduces to the following. If PZ and QZ are any two polynomials such that degree, again the same thing, of PZ is less than equal to degree of QZ. और ये इसलिए है कि जब मैं वो ने कोशेंट लिया था, मैंने बोला था वो कि वो वेल डिफाइंड वो फंक्शन PZ by QZ आउटसाइड द डिस्क, बिकॉज इन्फिनिटी का आ जाएगा ना, आउटसाइड द डिस्क, इन्फिनिटी लिव्स आउटसाइड द डिस्क, तो वी हैव टू कीप दैट इन। एंड QZ has all its zeros in the unit disk I should say more or less than equal to 1, unit disk भी वही हो। Then if P of Z is less than equal to Q of Z on the boundary, then P dash Z is also less than equal to modulus of Q dash Z on mod Z equal to 1. Corollary, इसकी एक और corollary हो सकती है, what we call the Bernstein's inequality. ये important है, corollary second इसकी। Actually Bernstein's inequality को इसके बगैर भी प्रूव किया जा सकता है, बट इससे इजी है इस तरह से प्रूव करना। वो है कि if PZ is again a polynomial, is a polynomial of degree n such that with m अगर है इसका, m को अगर हम सेट करेंगे इसका मैक्सिमम ऑन द बाउंड्री in modulus, then this is a very important inequality. P dash Z is less than equal to n times maximum of mod Z equal to 1 P of Z on mod Z equal to 1, I think. हाँ, यही होगा। प्रूफ भी इसका बड़ा इजी, हम वही वाला यूज करेंगे। वो ये है कि लेट, वो तो वैसे भी दिया है m क्या है, so since m is equal to the maximum of the modulus of PZ on the unit circle, it implies that P of Z, चूंकि maximum modulus principle कहता है, तो maximum is always on the boundary of an analytic function and polynomials are analytic, so it means this, in fact less than equal to 1 के लिए भी होगा, लेकिन चलो it is just a definition. Now we take, हम एक और polynomial लेते हैं, Q of Z equal to this m times Z raised power n. Okay, so if we take QZ like this, so that मैं कह सकता हूँ degree of PZ जो कि n है, PZ is a polynomial of degree n, is less than equal to है actually, but
It is contained within this statement qz, and mod of pz is less than equal to m, which is equal to m times z raised power n in mod, which is equal to q times q of z for mod z equal to 1, क्योंकि अगर mod z equal to 1 है तो ये m के बराबर है और ये तो है ही qz, तो pz is less than equal to qz on mod z equal to 1. Hence by above theorem, I should have p dash z is less than equal to q dash z. हाँ, यहाँ पे ये भी है, एक चीज में भूल गया, कौन सा, qz के सारे जीरोस हैं इनसाइड द यूनिट डिस्क, वो इंपॉर्टेंट था, और ये है भी क्योंकि इसके सारे जीरोस है एट ओरिजिन. तो वी टेक qz एंड मैं लिखता हूँ all zeros of qz lie inside mod z less than equal to 1, क्योंकि इसका जीरो क्या है, खुद जीरो, वो तो है ही ओरिजिन. तो इसका मतलब by above theorem this should be true for mod z less than, नहीं, mod z equal to 1, because actually greater than equal to 1 है ना, क्योंकि पहले वाले में था वो greater than equal to k. तो अब मैं यहीं पे इसको खत्म करना चाहूंगा. It implies that अब q dash z किसके बराबर है, it is n times, so you have p dash z is less than equal to mod of q dash z is m into n into z raised power n minus 1 on mod z equal to 1. लेकिन अगर mod z 1 के बराबर है तो हम मल्टीप्लिकेशन में mod को स्प्लिट कर सकते हैं, तो मुझे मिलेगा that is p dash z is less than equal to n times m, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, on mod z equal to 1. That is, अगर मैं फर्दर लिखूं p dash z, m को अपना वैल्यू दे दूं, n times maximum of mod z equal to 1 of p of z. Okay, that's our Bernstein's inequality. Actually, अगर तुम सोचो तो it is true for not just one, mod z greater than equal to 1. लेकिन यूजुअली हम इसको ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे भी ध्यान रखना, इट इज द मैक्सिमम ऑफ दिस, राइट. ऑफ कोर्स यहाँ पे z कोई भी, मतलब ये फिक्स्ड नंबर है, यहाँ पे एक रेंज ऑफ सेट नंबर्स है where z could be in modulus bigger than equal to 1, in particular equal to 1. Okay. इससे हम एक और थ्योरम प्रूव कर सकते हैं. अच्छा, ये एक एक्सरसाइज है. So what is the exercise? एक्सरसाइज ये है, लेकिन इसको हम थ्योरम की तरफ भी देख सकते हैं बिकॉज इट्स a general sort of statement. ये है कि for every c not equal to 0, the trinomial, यानी a polynomial with 3 terms, p of z is equal to 1 minus z plus cz raised power 1, and of course n has to be bigger than equal to 2, obviously, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में तो पता ही है क्या जीरो है कहाँ है, has a root in the region, ये अच्छी एग्जांपल है, in the region mod of z minus 1 less than equal to 1 and mod of z minus 1 greater than equal to 1. Proof. Less than equal to 1 का दिखाना easy है. Now let, now we will show first that it has, we show first that p of z has at least one root in mod z minus 1 less than equal to 1, क्योंकि वो easy है. Now what would be p of z plus 1? P of z plus 1 is 1 minus z plus 1 plus c into z plus 1
how do I write it? Raised to power n. ये मैंने गलत तो नहीं लिखा. It is c into z raised to power n. Okay. So that would be equal to p of z plus 1. P of z e है. Okay. So that would be equal to, let's see what is the constant term. इसमें constant term would be important. Okay, यहाँ पे तो ये 1 और 1 खत्म हो गया, so I would have a z, right? इस पे अगर हम binomial theorem लगाते हैं तो it would be c into क्या होगा, n choose 0 z raised power n plus n choose 1 z raised power n minus 1 plus so on and so forth. Then you would have n choose n minus 1 into z. ये मैं बाद में लिखूंगा plus of course you would have 1 of course क्योंकि वो होगा n choose n तो वो तो 1 है, ये भी 1 है वैसे. And then I have minus z क्योंकि ये minus z यहाँ था, 1 और 1 खत्म हो रहा था. So that would be equal to c into z raised power n plus then I should have n into c into z raised power n minus 1 plus so on and so forth. यहाँ पे होना चाहिए actually n times z, so it should be n minus 1 times z. And then I should have no c है ना इनके साथ, so it should be cn minus 1 times z and plus c क्योंकि c है ना constant. Okay, p of z plus 1 ऐसा है. So let z1, z2, zn be zeros. No, z नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि z उसके zeros हम लेंगे, ठीक है ना. Okay. So let wi, I runs from 1 to n, be zeros of p of, चलो मैं इसको लिखता हूँ q of z, better of q of z, right? Then product मैं ये याद रखना, ये चीजें कल तुम्हें यूज करनी पड़ेंगी. मतलब ये भी है ना एक रिलेशन कि प्रोडक्ट होता है लास्ट कांस्टेंट डिवाइड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट. इनका प्रोडक्ट होगा mod of c by c, that's equal to 1, which implies that अगर इनका mod होगा 1 तो इसके अगर सारे जीरोस होते बिगर देन इक्वल टू 1, बिगर देन 1, तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी बिगर देन 1 होता, क्योंकि अगर जो नंबर्स बिगर देन 1 हो तो उनका प्रोडक्ट भी बिगर देन 1 ही होगा. सो देयरफॉर at least one, so we must have at least so we must have, it implies that wi must be less than equal to 1 for at least one I. But wi is equal to zi minus 1 for all I running from 1 to up to n, where zi is a zero of pz. क्योंकि q of zi minus 1 होगा p of zi जो कि 0 है ना. मतलब wi मतलब इसके जीरो इसी टाइप के होंगे, क्योंकि जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा आई विल गेट p of zi, लेकिन p of zi तो 0 है because zi is supposed to be a zero of pz. So which implies that zi minus 1 should be less than equal to 1 for at least one I. कहने का मतलब इसका कम से कम एक जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. Therefore, at least one zero of pz lies in mod of z1 minus 1 less than equal to 1. इसका अभी खत्म होने वाला है तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे. और जो आमिर तुम अटेंडेंस का देखते हो